So hello everyone. In today's session I will be discussing about the technique called FPLC, also known as Akta. So basically the full form of FPLC is fast protein liquid chromatography, or we can also say fast performance liquid chromatography. So this chromatography is a medium pressure chromatography. This is related to pressure. Also, why we are going to study about this FPLC, or also called ACTA technique. So basically what happens if you are going to apply in some industry like biotech company after your post graduation or graduation, they are going to ask you about this technique in an interview, because this technique is very widely used in industries which deals with protein production. So basically what happens in biotech companies, they manufacture enzymes. So for enzyme isolation and its purification, some sophisticated methods are used. So FPLC is one of them. So this technique is used in the field of biochemistry and enzymology, and basically this deals with the purification of biomolecules which are heat sensitive or pressure sensitive. So now the confusion part is that this technique is also called ACTA. So why it is called ACTA? Also in interview, they will ask you by saying that tell me something about ACTA. Instead of calling it FPLC, they will ask by calling it ACTA. So basically why this technique is called ACTA? So according to what I have researched, ACTA is a versatile automated liquid chromatography system. तो हमें पता है कि हमारे लैब में जितने भी हमारे टेक्निक्स हैं, लाइक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ले लो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ले लो, ऑल दीज टेक्निक्स, ऑल्सो मैनी अदर्स, ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसमें जो ये टेक्निक है, जो भी डेटा ये आउटपुट करते हैं, वो उस सिस्टम में रिकॉर्ड होता है और फिर वो आइदर ग्राफ के फॉर्म में या एनी अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है टू द यूज़र और टू द रिसर्चर्स. ऑल्सो ये सिस्टम में कुछ तो सॉफ्टवेयर ही ऐसे डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि अगर कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसका रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में फीड करके रखा रहता है कि उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को रन करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है उसमें पैरामीटर्स पहले से प्री डिटर्मिंड है. सो यूज़र को कुछ नहीं करना होता, दे न्यू ओनली द बेसिक स्टेप्स वेयर दे हैव टू गिव कमांड टू द सिस्टम एंड द होल टेक्निक विल रन बाय द हेल्प ऑफ दैट कंप्यूटर सिस्टम. सिमिलरली एक्टा भी ऐसा ही एक सिस्टम है. मैंने ये सारे जो पहले आपको एग्जांपल्स दिए वो इसलिए दिए क्योंकि मैं समझाना चाहती थी कि एक्टा का यहाँ पे क्या रोल है और इस सिस्टम को एक्टा क्यों बोलते हैं, आई मीन इस टेक्निक को. बेसिकली एज आई हैव सेड अर्लियर, एक्टा इज़ ए versatile automated liquid chromatography system for the fast purification of the proteins, peptides, nucleic acids and other biomolecules in even microgram levels. मतलब जितना कम से कम प्रोटीन होता है उसको भी वो बहुत अच्छे से efficiently purify कर लेता है. So basically ACTA is a Google of protein purification. So अगर आप principle की बात करें, so यहाँ पे लिखा है in FPLC solvent velocity is controlled by a microprocessor through a software interface to maintain the constant flow rate of the solvents. The eluent is passed through the detectors to measure the salt concentration by conductivity and protein concentration by absorbing UV light at the wavelength of 280 nm. If you are working in a lab or you have this life science background, you must be knowing this, that proteins are UV detector में detected at 280 nm. Okay, so this is the principle that I have written. So ACTA एक सॉफ्टवेयर है जिसमें लाइब्रेरी प्रेजेंट होती है, जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ कॉलम के पैरामीटर्स, कौन सा कॉलम कौन से पैरामीटर पे यूज़ करना है, इवन टेम्पलेट्स और फीचर्स होते हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना है, एंड इवन उनमें सेंसर्स डाले रहते हैं फॉर हाई प्रेशर एंड एयर बबल्स. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये इसको पहले से सब कुछ पता है क्या करना है इस टेक्निक में. जो हमारे यूज़र या जो साइंटिस्ट या रिसर्चर है या आप जो लैब में काम कर रहे हैं, आपको बस कमांड देना होगा, ये सब कुछ वो खुद से रन करेगा. सो अगर आपसे कोई बोले प्रोटीन प्यूरिफिकेशन इन इंडस्ट्री, सो एक्टा और एक्टा से रन करने वाला ये FPLC सिस्टम जो इस पर बेस्ड है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी तक जो भी मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये जानने के लिए कि ये है क्या. और कहीं पे भी आप गूगल सर्च या NCBI के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रिसर्च आर्टिकल्स या जितने भी ब्लॉग्स, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है इसको जानने के लिए. सो मैंने इसलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इसको समझाया बेसिक आइडिया को. अब देखेंगे ये पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं ये क्या क्या है. वो पहले वाले पॉइंट्स आप उनको नोट करके नोट्स बना सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन हियर. It helps in purifying proteins with high resolution and reproducibility. Yes, I have discussed this point. Next, stationary phase is composed of small diameter beads, generally cross-linked agarose, packed in glass and plastic columns with high loading capacity. So basically this technique FPLC जो है, इसका एक अपना basic framework है और it is combined with other chromatography. Okay, as I have listed below.
these chromatographies are ion exchange, gel filtration, affinity, chromatofocusing, hydrophobic interaction and reverse phase etc. पर इनमें से भी anion exchange and gel filtration chromatography are the two most commonly used in this FPLC technique. So once again I will explain this FPLC chromatography जो है, this technique is combined with other chromatography. So इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क तो रन करता है बट बीच में एक दूसरा क्रोमेटोग्राफी वर्क कर रहा होता है. ओके सो वो वही बात की हुई कि यहाँ स्टेशनरी फेज में स्मॉल डायमीटर के बीच कॉलम पैक्ड होते हैं आइदर ग्लास और प्लास्टिक. फॉर दिस पॉइंट टू अंडरस्टैंड आई होप आपको प्रायर बेसिक नॉलेज है क्रोमेटोग्राफीज का, कॉलम क्रोमेटोग्राफी. ऑल्सो दीज क्रोमेटोग्राफी आई होप यू हैव एटलीस्ट बेसिक नॉलेज अबाउट ऑल दीज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. नाउ कमिंग टू द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ दिस टेक्निक. सो हमारे पास दिया रहता है बफर ए बफर बी डालने का एरिया. Then this buffer get mixed in mixer. Later on the sample loop is there where you have to feed the sample. Also then comes the column again, and here is a UV monitor where you will be this UV monitor is not you, of course this UV monitor is going to detect the result, and then waste will be removed out, and there is a area where this whole sample will get collected. This is called fraction collect. So yes, this is the very basic framework. I hope you are clear. If you want to learn it in more in-depth way, you should consider some research articles present on NCBI or some blogs written by researchers or scientists. So here I have left 2 points to discuss, which are like this. So reagents used in the column are of wide range particle size and ligand surfaces selected on the basis of their application. So reagents which we are going to use in the column in this FPLC system are of particle size or ligand surfaces based on their application. What type of application we are selecting, the size will be based on that. Later on, in this FPLC system, use of wide range of aqueous buffer, which is mobile phase, along with different stationary phases to perform main chromatography modes, like these chromatography techniques as I have discussed earlier. So as I have discussed earlier in the framework that this whole system is combined with other chromatographic techniques. So FPLC is a chromatographic technique, but then again it's उसके बेसिक फ्रेमवर्क में एक दूसरा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक रन कर रहा होता है. ठीक है, सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है. इस लाइन का मतलब यही है. पहले तो इस लाइन से हमने ये वाले लाइन से हमने ये समझा कि हमारा जो बफर है जो कि बेसिकली मोबाइल फेज की तरह एक्ट करने वाला है, उसमें वाइड रेंज ऑफ बफर हम यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो हमने देखा फ्रेमवर्क में कि 2 बफर डालने का पोजीशन था, बफर ए एंड बफर बी गिवन, एंड देन स्टेशनरी फेजेस भी वैरी कर सकते हैं ताकि वो मेन क्रोमेटोग्राफी मोड्स को परफॉर्म कर सके. और मेन क्रोमेटोग्राफिक मोड्स में ये सारे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आते हैं, और मैंने बताया है कि आयन एक्सचेंज एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफिक मोस्ट कॉमनली यूज. So this FPLC technique is running in an Akta machine, which is a predefined software, automated software, as I have said earlier, and 2 chromatographic techniques is running together. So this whole thing is called FPLC system. This is why I have written system here. So वेरियस मैन्युफैक्चरर्स जो है मार्केट में वो एक्टा के डिफरेंट वर्जन्स लेकर आ चुके हैं. ऑफ कोर्स साइंटिस्ट के कोलैबोरेशन के साथ ये मैन्युफैक्चरर्स जो हैं कोई भी सिस्टम का अपग्रेड करते रहते हैं. सो देयर इज़ वन एक्टा प्राइम सिस्टम जो कि ऑपरेट करता है एफिशिएंटली विथ मोस्ट प्री पैक्ड कॉलम सच एज हाई ट्रैप एंड हाई प्रैप, और ये इक्विप्ड होता है फ्रंट पैनल LCD डिस्प्ले के साथ विथ पुश बटन्स. उसके बाद GE एक्टा प्राइम प्लस जो होता है वो ऑफर करता है हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड यूज़र कन्वीनियंस. ओके, now GE एक्टा प्राइम प्लस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम also features pre-programmed methods for common applications such as purification of affinity tagged proteins and MABs, monoclonal antibodies. So अब ये न्यू वाले अपडेट में ये स्पेसिफिक हो गया. अगर किसी को भी एफिनिटी टैग प्रोटीन्स को प्यूरीफाई करना है या मैप को प्यूरीफाई करना है तो वो सीधा जाके क्या करेगा, GE एक्टा प्राइम प्लस में उसको जाके रन करेगा या सैम्पल फीड करेगा. ओके, so this is how the various versions are specific to certain specific proteins. Also one more point to add, in FPLC system जो मशीन है हमारा एक्टा वो हमारे प्रोटीन सैंपल को लेता है और पंप करता है onto a column. So this whole system is easily customizable liquid chromatography system and designed for protein purification as I have discussed earlier. Let's see what I have written about GE Acta Prime Plus here. So GE Acta Prime Plus is a compact and versatile one-step purification. Again, this is a specific one-step purification system designed to perform general purification tasks including affinity chromatography, buffer exchange, ion exchange, etc. So again, इसमें affinity chromatography और ion exchange specifically हो रहे हैं. So at last this is it from my side. I hope you have enjoyed this introductory session. अब आप इंटरव्यू में ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जब कोई आपसे पूछे FPLC क्या है, एक्टा है, एक्टा प्राइम क्या है, तो बेसिक नॉलेज अब आपके पास है. अगर इन डेप्थ और स्टडी करना है तो मैं फिर से एक बार बोलूँगी NCBI में जाके पढ़ें इसके बारे में. और अगर आप कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो ऑफकोर्स आपको एकदम
अच्छे से इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा और आप ओके एज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम आई फॉरगॉट टू टेल you that these are pump. Okay, I hope you have enjoyed this video. Thank you for watching it, and I will be uploading such videos more. So yeah, thank you once again.